देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है और अगर भारत में कोई एक बड़ा बदलाव हम चाहते हैं विदाउट यूथ टेकिंग इनटू दैट फोर्स, ये पॉसिबल नहीं है। भारत के स्वाधीनता के बाद से ही ये सोच तो हमेशा से रही है, लेकिन बहुत सारे पॉलिसीज़ और बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो यूथ के जो पोटेंशियल है उसको अनलीश नहीं कर पाया है। आज की अगर शिक्षा व्यवस्था देखें, जिस तरीके के हम लोग अपने जनरल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें यूथ की लीडरशिप उस तरीके से अनलीश नहीं हो पाती है। और ख़ास करके अगर हम भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसमें हमारे युवाओं का बहुत योगदान की ज़रूरत है। 2008 में हम लोगों ने गांधी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने यूथ को एक इस तरीके का अनुभव देने का कोशिश किया जिसके द्वारा वो अपने इनर लीडरशिप को महसूस कर पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दिया 2024 में टू इंटीग्रेट ऑल दिस लर्निंग ऑफ वर्किंग ऑन यूथ लीडरशिप इनटू ए कर्मयोगी सारथी प्रोग्राम, जहाँ पे कि सम यूथ who has some experience of 3 to 4 years, has some passion to work with the government, some interest to do some learning into the government policies. So they part of this Karmayogi Saarthis program, and Piramal Foundation as a project management unit supporting capacity building commission to build the capability of this Karmayogi Saarthis. After Karmayogi Saarthis joined the Capacity Building Commission, we did the induction program with them with a lot of leadership modules like influence without authority, non-violent communication, active listening, empathy, compassionate leaderships, etc. And post that also we also supported them with the different concept like developmental one-on-one, and they have worked intensively 6 months in different ministries, department and organizations for setting up capacity building units, for annual capacity building plans, and as well as the recent one, the National Learning Week. And after the 6 months of work, I think it is a time to reflection, because we learned that if you want to do a self transformations, the action and post that reflection is very much required, and post reflection again action is required. So in that thought, we created this 2 days program called Chintan Shivir at Piramal School of Leadership, Baggar, Rajasthan.